Hello one and all. Today's topic is Fourier series. So start. As we know that Taylor series representation of function are valid only for those functions which are continuous and differentiable. But there are many discontinuities periodic functions which require to express in terms of an infinite series containing sine and cosine terms. Fourier series which an infinite series representation of such function in terms of sine and cosine terms is useful here. Thus Fourier series are in certain sense more universal than Taylor series as it applies to all continuous periodic functions and also to the functions which are discontinuous in their values and derivatives. Fourier series are a very powerful method to solve ordinary and partial differential equation, particularly with periodic function appearing as non-homogeneous term. Next is Fourier waves. तो ये है आपके पास Fourier waves. Fourier series can be generally written as f of x is equals to 1 by 2 a naught plus summation infinity to n is equals to 1 an cos nx plus summation infinity to n is equals to 1 bn sin nx. Always use cos in an and bn in sin. So जो a नोट है वो आपके पास 1/पाई लिमिट्स इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स पाई टू माइनस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ऐसे ही जो ए एन होता है वो होता है एफ एक्स कोसन एक्स एंड जो बी एन है वो है एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स. Basic formulae for Fourier series. The Fourier series of a periodic function f of x with period 2 pi is defined as trigonometric series with the coefficient a naught and an and bn known as Fourier coefficient. The individual terms in Fourier series are known as harmonics. Every function f of x of a periodic 2 pi satisfying following conditions such known as Dirichlet condition can be expressed in the form of Fourier series. Conditions. F of x is bounded at single value. A function f of x is called single valued if each point in the domain it has unique value in the range. F of x has at most a finite number of maxima and minima in the interval. F of x has at most a finite number of discontinuities in the interval. Example है inverse functions हैं inverse sin inverse x. We can say that the function sin inverse x cannot be expressed as Fourier series as it's not a single valued function. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है इवन फंक्शन साइंस फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस. कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इवन फंक्शन के साथ फोरियर सीरीज. तो इवन फंक्शन के साथ जो फोरियर सीरीज होती है उसका फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल. सो इसमें जो ए बी एन है वो 0, ए नोट इज 2 बाई एल limits L to 0 f of x dx. an is 2 by L limits L to 0 f of x cos n pi x upon L dx. ये है आपके पास इवन फंक्शन का फॉर्मूला. उसके बाद ऑड फंक्शन का फॉर्मूला. तो ऑड फंक्शन में फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है f of x इज इक्वल्स टू समेशन इन्फिनिटी टू n इज इक्वल्स टू 1 bn sin n pi x upon L. So bn is equals to 2 by L limits L to 0 f of x sin n pi x upon L dx. Example है एक find the Fourier series f of x is equals to x square plus x. So as you know what is the formula for Fourier series? The formula for Fourier series is f of x is equals to 1 by 2 a naught plus in summation infinity n is equals to 1 an cos nx plus
बी एन साइन एन एक्स। सबको पता है कि ए नोट की क्या वैल्यूज़ होती है, सो वैल्यूज़ पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करके ए नोट निकालोगे, ए एन निकालोगे जैसे कि क्वेश्चन में निकाला है, उसके बाद बी एन निकालोगे और देन जो सभी आपके पास सोल्यूशन निकलेंगे उसको जो है फोरियर सीरीज़ में पुट कर देंगे। ये है आपके पास फोरियर सीरीज़। थैंक यू।